So today we are going to start with our second chapter of chemistry, and this is solutions. As promised earlier in your first year, that in the chapter of states of matter, we are going to discuss about gaseous state. And then I told you that in our 12th class, the first two chapters we are going to read about the solid state and as well as your liquid state. So, in the first chapter, we talked about the solid state. We tried to understand whichever solid we find around us, how many types of them are present and what are their characteristics and their properties. In this particular chapter, we will be talking about solutions. Now, whenever I say solution, whenever I say a solution, what is the first picture which comes to your brain? Anyone? Sir, it is in the liquid form. Mostly, this is what comes to anyone's brain when we say a solution. But that is the first thing which we are going to cross from our brains. Okay, that is a misconception that we want to remove from your brains, that जब भी हम लोग solution बोलते हैं, then our brains imagines a liquid. But today, let me make it very clear that a solution can be a solid, a solution can be a liquid, or a solution can be a gas. Solutions can be in solid phase, solutions can be in liquid phase, solutions can be in gaseous phase. The very first misconception that is present in our brains must be removed, that solution bolte are something liquid, something water, something aqueous. No, nothing like that. Solutions are nothing but, let us just define them. Sir, what is a solution? A solution is a homogeneous mixture. A solution is a homogeneous mixture of two or more than two components. Solution is a homogeneous mixture of two or more than two components which cannot be separated by any simple physical means. What is the meaning of simple physical means? You see, what happens is whenever mom tries to cook, earlier people used to do that. Mom tries to cook. She takes dal and tries to remove all the stones out of it. Okay, if she takes rice, from rice also she would like to remove all the stones, small dirt particles if they are. Nowadays we are getting everything clean and pure one, but earlier people used to do that. So by a physical means they are doing. Say for example, I'm having iron filings and stones which are mixed together, sand mixed together. I'll take a magnet and I will try to remove it. So what happens is, if physically, if you can remove two components, if you can separate two components, then we cannot call them as solution. Okay, solutions ko separate karne ke liye, in order to separate the solute and the solvent from the solution, or in order to separate the two components from a solution, there must be some special procedure which has to be done. Okay, only such type of mixture or homogeneous mixture, we will call it as nothing but a solution. Is there any problem? No, sir. No, sir. Now, a solution has got two components. A solution has always got two components, two major components in it. What are those? Let us have a look. A solution mainly comprises of two important parts. One is your solute, another one is your solvent.
one is your solute and the other one is your solvent. Now, how should we define this solute and solvent? Okay, so generally हम लोगों के दिमाग में क्या चलता है? Okay, from our junior classes हम लोगों को क्या लगता है? Solvent बोलने से water, liquid, ऐसा हमें लगता है. बट अब से हम लोगों को पता चलेगा सॉल्वेंट सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो हाउ टू डिफाइन दिस सॉल्वेंट एंड सोल्यूट विदाउट डिफाइनिंग इट एज सम आर ओल्ड ट्रिक्स के हिसाब से हम लोग अगर इसको बोलेंगे राइट लिक्विड होता है तो वो सॉल्वेंट है, नहीं. हाउ टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स? सो लेट अस जस्ट हैव अ लुक. सो the component which is present in minor quantity, the component which is present in minor quantity is called as solute, and the component which is present in major quantity, the component which is present in major quantity is called as nothing but your solvent. Okay, one simple definition for your solute and solvent. Solute is that component which is present in minor quantity, that means in lesser quantity. Solvent is that component which is present in major quantity. Sir, this is something which we know from our junior classes also. Sir, tell us something new. So something new which we added in our first year itself is that the phase of solvent. Okay, ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को. Okay, even in the first year we talked about this. The phase of the solute, sorry, the phase of the solvent decides the phase of the solvent decides the phase of solution. That means if your solvent is in solid phase, then solution will also be in solid phase. If the solvent is in gaseous phase, even the solution will be in gaseous phase. If the solvent is in liquid phase, even the solution will be in liquid phase. Is that okay? Does anyone have any problem with this? No, No, sir. sir. No, Yes. sir. So the phase of the solvent decides the phase of the solution. Okay, this is a very important point, sir, because many a times we will come across different types of mixtures where if someone asks us to guess the phase of the solution, then we have to simply look for phase of the solvent. The phase of the solvent always decides the phase of the solution. Okay, that is the most important thing. Now, in this particular chapter, okay, we are only going to deal with okay, in this particular chapter, we are only going to deal with binary solutions. We are going to deal with binary solutions. So already in your IP computer science, people must have studied what is the meaning of binary. Only zeros and ones, yes or no? In the same way, even in our solutions, we have binary solutions. What is the meaning of binary solution? सर Only सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होगा. solute or solvent, मिलके से मिलके बने. बना होगा Only सॉल्यूशन. two components. but only two components. No, no, no. ऐसा नहीं कि solute और solvent तो हमेशा रहेगा, नहीं तो वो solution कैसे बनेगा? Only one solute in one solvent. Only one solute in one solvent. मतलब we will not add multiple solutes. Say for example, घर में करी बन रहा है, say for example, तो उसमें बहुत सारे
हम लोग सॉल्ट डालते हैं, चिली पाउडर डालते हैं, हल्दी डालते हैं, या कुछ अलग करी पाउडर्स डालते हैं. सो दैट मीन्स देयर आर मेनी थिंग्स एडेड टू इट. दैट मीन्स वो बाइनरी सोल्यूशन नहीं है. ओके, वो एक सोल्यूशन है विद मल्टीपल सोल्यूट्स. बाइनरी सोल्यूशन मीन्स एक सोल्यूट इन वन सॉल्वेंट, वन सोल्यूट इन वन सॉल्वेंट. डू वी agree with this? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So we have understood what exactly is our binary solution, and then we understood, sir, a solution is nothing but a homogeneous mixture of solute and the solvent. Now, as I told you already, that the phase of the solvent decides the phase of the solution. Here, what are the different types of solutions which we can see? So under types of solutions, if I say this, okay, types of solutions, if under this, if I say, sir, we have solid solution, we have liquid solution, and we have gaseous solution. अगर मैंने ऐसे बोला तो सबसे पहला चीज, आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता चल रहा है सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन होगा? कितने लोगों को पता चल Solid होगा. Solid ही होगा, Solid होगा. solid. वेरी गुड. Solid होगा. सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड ही होगा, बिकॉज वी हैव जस्ट रेड दैट the phase of the solvent decides the phase of the solution. तो obviously मैं अगर solid solution का बात करता हूं, then solute will always be solid. बहुत अच्छा बात. अब हम लोग बात करते हैं solvent will always be solid. Let us now talk about the solute. Now the solute can be either solid or liquid, or this can be gas. Okay, now tell me, sir, solid solution का एक एग्जाम्पल. तो क्या किसी को कुछ याद आ रहा है? सॉलिड सॉल्यूशन आज तक हम लोगों ने कभी देखा है? Sir, copper. Copper कहाँ से? कॉपर इज अ प्योर मेटल. वो सोल्यूशन कहाँ है? कॉपर में और क्या एडेड है? Sir, copper अगर Copper gold में add होगा gold तो. सर मिल जाएगा सर, तो फिर याद रखिए, एलॉय. क्या है? एलॉय. A homogeneous mixture of two different metals. Say for example steel. Steel is an example. Gunmetal, brass, bronze. ये सारे examples हैं आपके solid solution के. इसमें 2 या 3 solid metals को अलग अलग composition में add करके हम लोग उसका क्या बनाते हैं? Alloy बनाते हैं. तो वो क्या है? सर Solid amalgam भी होगा solution. क्या सर? First of all, understand what is the meaning of amalgam. Amalgam means it is a mixture with mercury. सब amalgam भी होगा क्या? Sir, तो वो liquid and solid Amalgam होगा ना is sir. a mixture of mercury, and mercury is in liquid phase. Yes, तो sir. amalgam कहाँ से आया? So amalgam, सबसे पहले दूसरे बच्चे जिनको पता नहीं है amalgam क्या है, understand, whenever we mix mercury with some other metals, the resulting mixture is called as nothing but a amalgam. तो याद रखिए, amalgam is generally used in order to fill the teeth and other things. Okay, so amalgam अगर हम लोगों को बताना है, then that can be a example of our second type of solution, that is solute liquid and solvent solid. If we add liquid mercury into some solid metal like gold or silver, and if we try to make amalgam, then that may be an example of your second type of solution, that is liquid in solid solution. Any problem with this? No, sir. No, sir. Now let us have an example of gas in solid. क्या हम लोग इससे पहले देखे हैं gas in a solid? Yes sir. Think about this. Okay, this is called as heterogeneous
heterogeneous catalysis or heterogeneous catalyst. Let us understand what is the meaning of this heterogeneous catalyst. Okay, what are heterogeneous catalysts? Okay, and how gas on solid is coming. ये इसके बारे में एक पूरा चैप्टर है आगे जाके, सरफेस केमिस्ट्री, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए आप लोग ये याद रखेंगे. देखिए, say for example I am having some unsaturated compounds like ethene. 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2. ओके, if I am having an ethene or I am having propene, any unsaturated compound जहां पे pi bond रहता है, सच कंपाउंड को मैं अगर प्लैटिनम या निकल के सरफेस के ऊपर क्या करता हूं ना, सबसे पहले हाई प्रेशर में हाइड्रोजन को पंप करता हूं. एट हाई प्रेशर first I will try to pump hydrogen gas onto platinum or nickel surface. तो इससे क्या हो जाता है बेटा, hydrogen will get attached onto the surface of this metal due to van der Waals forces. Due to van der Waals forces, hydrogen will get strongly adhered or hydrogen will get strongly attached to the surface of the metal. So on this metal, hydrogen is evenly spread throughout. So this particular thing over here, now we can call it as a solid solution of what? Of a gas on a solid. Okay, of a gas on a solid. Hydrogen is a gas and platinum or nickel which you are taking is a solid. So that is why we are calling it as an example of solid solution of gas in liquid. Hydrogen gas is pumped onto the surface of platinum or nickel, and this particular example can be taken as an example of gas in solid. Do you people understand? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. बोलो शुभम. सर वो हाइड्रोजन कैटलिस्ट थोड़ा समझ नहीं पाया सर. हाइड्रोजन कैटलिस्ट में क्या नहीं समझ पाया? हाइड्रोजन इज पंप्ड onto the surface of platinum, ये समझ में आया? यस सर. When hydrogen comes very close to the surface of platinum, there will be an attraction force. Platinum atom and a hydrogen atom will come closer. They will come so close that there will be an attraction force. What attraction force? Van der Waals attraction force will arise, due to which the hydrogen atom will stick onto the surface of platinum with a very weak force called as van der Waals force of attraction. अब क्या होगा? अब हम लोग क्या करेंगे सर? We will take this ethane, and we will allow this ethane to flow on the surface of this platinum with hydrogen. कैसे कर सकते हैं ये? इथीन एक्चुअली गैसियस फेज में या फिर लिक्विड फेज में होता है. थोड़ा लिक्विड फेज में लिक्विफाई करने के बाद इस प्लैटिनम का शीट को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे स्लैंटिंग पोजीशन में रख देंगे, and we will allow this ethene to flow over this. When ethene is flowing, hydrogen will get attached onto the carbon and this double bond will be broken. तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा. So platinum के presence में hydrogen is directly getting attached onto ethene. That is why we are calling it as heterogeneous catalyst. Heterogeneous means two different phases. Heterogeneous means two different phases. Homogeneous means a single phase. Heterogeneous means two different phases. Now gas, hydrogen is in gaseous form and your platinum is in solid form. So obviously this is a heterogeneous catalyst. Now is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. प्रोपेन बनेगा, प्रोपीन नहीं, सॉरी, इथेन बनेगा, because we have taken ethene, unsaturation खत्म हो गया, we will have ethane. Okay, to remove unsaturation generally we do this reaction. This reaction is otherwise called as hydrogenation, hydrogen addition reaction, hydrogenation. So the example for
a gas in solid. Okay, so for an example of a gas in solid, we can take hydrogen plus hydrogen plus platinum और hydrogen plus nickel, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं heterogeneous catalyst. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Hydrogen plus platinum or hydrogen plus nickel. Very good. So that is one thing. Now, this was the three types of your solid solutions. Now let us move on to our liquid solutions. So when I say liquid solutions, the one thing that is fixed is the solvent is going to be Liquid, sir. liquid. Liquid. Very good. The solvent is going to be liquid because हमें पता है that the solvent decides the phase of the solution, and if the phase of the solution is liquid, then solvent should also be liquid. So obviously here we are having it in liquid phase. So now let us have a look. Sir, it can be solid in liquid, it can be a liquid in liquid solution, or it can be a gas in liquid solution. Now, first let us have an example of solid in liquid. पता है हम लोगों को solid in liquid, isn't it? Yes, sir. Sir, glucose. क्या है? Glucose होगा. Sir, Sugar को भी water में NaCl. Salt plus water, sugar plus water, plus water. glucose plus water. Okay, so simply Sir, add any. sugar और water कैसे होगा, sir? Sugar is a solid, water is a liquid. Sugar plus water is a liquid solution. क्यों नहीं होगा? Yes, sir. होगा. हैं? एक solid को एक liquid में add करना है. Sugar is a solid, liquid is water is a liquid. We add both of them, we will get a liquid solution. Next, if we talk about liquid, what can we say? Sir, alcohol in water ये सब हो सकता है. So liquid in liquid can be alcohol in water, और मम्मी जो है घर में लिक्विड डिटर्जेंट या फिनाइल ऐड करती है वाटर में, सो फिनाइल इन वाटर. ओके, और एल्स से फॉर एग्जांपल lime water, lemon juice in water. Okay, these are all Dilute acid. Okay, dilute HCl, these are all examples of your liquid solution. Now let us understand a gas in liquid. Can you tell me an example for this? Sir, oxygen in water. Carbonated water. Carbonated water. हम लोग जो cold drinks पीते हैं, right? So obviously carbonated water जो हम लोग cold drinks पीते हैं, या फिर okay, all the gases which are dissolved in water. For example, जैसे अभी शुभम बोल रहा oxygen in water. Fishes are aquatic life is possible only because oxygen is getting dissolved in water. So here we can say carbonated water. Carbonated water मतलब सोडा सर, मतलब हम लोगों का कोल्ड ड्रिंक्स, राइट? नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. अब गैसियस सॉल्यूशन बोलते ही हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? दैट मींस द सॉल्वेंट इज गोइंग टू बी gas. Now here again we can have three different types of solutions: solid in gas, liquid in gas, and gas in gas. Now tell me, have we ever seen a solid in gas? Yes, sir. Yes, sir. What will be the example? Sir, camphor. Perfume, sir. Perfume is not a solid beta, perfume is a liquid. So perfume in air is a liquid. Okay, तुम लोग बोल सकते हो naphthalene balls in air because naphthalene solute है. एक closed container में क्या होता है, naphthalene goes into the vapor phase, equilibrium में हम लोग पढ़े थे, और वो वापस अपना solid phase में आते रहते हैं. So as they exist in a equilibrium over there, so examples can be either your camphor plus nitrogen gas or camphor in nitrogen atmosphere, or else as I told you right now, naphthalene balls in a closed container. Okay, these can be examples of your solid in a gas. Is there any problem with this? No, sir. No, sir. Now let us understand liquid in gas. Liquid in gas.
विशाखापट्टनम कभी गए हैं हम लोग? Yes, sir. Yes, तो वहां पे एटमॉस्फेयर में क्या हम लोगों को बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी पता चलता है? Humidity, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट मीन्स लिक्विड वाटर वेपर फेज में डिसॉल्व हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा वेपर फेज हाँ, में चल sir. जाता है. तो ह्यूमिडिटी, isn't it an example of liquid in gas? Yes, Okay, air is nothing but gas, and we are having liquid getting dissolved in it. So liquid in gas is your humidity. Okay, next, gas in gas. sir. NO2 होगा sir. Yes, क्यों sir. सर, और कार्बन डाइऑक्साइड. इतना अच्छा हमारा Nitrogen mixed एयर air. है, इतना अच्छा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. एयर है जिसमें हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, NO2 ये वो, क्यों सर, क्यों? हाँ, डायरेक्टली आर एयर इज अ perfect homogeneous mixture of gas in gas. Carbon dioxide, carbon monoxide, chlorine, fluorine, hydrogen, oxygen, water vapor, everything together. Okay, so a mixture of gases. Okay, so obviously it is a homogeneous solution. So gas and gas, a simple example can be your air. क्या हम लोगों को ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So for now we have understood what exactly is the meaning of a solution, and we have understood what are the different types of solutions which we are having. Either we are having gaseous solutions, we are having liquid solutions, we are having solid solutions. Sir, कौन सा solution होने से solvent कौन होगा और उनका example क्या क्या है? These are the things which we have already studied. Now let us move a little more ahead. जब भी मैं सॉल्यूशन का बात करता हूं तो हम लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए? सर, as I told you during your first year also, that whenever I say solution for humankind, just for example, I'm making a cough syrup, I'm making a carbonated drink, okay, or I am making lemon juice in our house. Okay, defining concentration is very much important. Do you people agree with this? Yes, sir. Yes, sir. Because in order to prepare a solution, we have to take a solute and we have to add it with a solvent. So whenever such process of adding a solute and solvent together is coming, obviously expressing your concentration is very much important. अगर मुझे concentrations पता नहीं होगा, then it will become very difficult for us. It will become very difficult for us, because what will happen, sir? If I don't know what is the concentration, then how am I going to, okay, how am I going to talk about how much solute should be added into how much solvent, and how can I make it sure that every time the amount of solute and the solvent added is same, every time I will get the same type of solution? ये गारंटी करने के लिए, ओके, मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करना पड़ेगा. क्या मेरा आवाज सबको ऑडिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, राइट. क्योंकि साहिल बिस्सोई मैसेज कर रहा है, उसको आवाज नहीं जा रहा है. ठीक है. सो defining concentration is very much important whenever we are going to talk about solutions. Now, once I ask you people to revise the mass percent, volume percent, molality, okay, and the meaning for that was this. Because in order to express concentrations, we all must know all these terms. I hope you people have revised it from the first year once. Okay, so there are different concentration terms. There are many concentration terms in chemistry. So now the question is, आप लोगों में से बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, sir, why these many concentration term? जब आप concentration define करते हैं chemistry में, then why not a single concentration term? Why so many? The reason is, we are having a variety of solute and a variety of solvent.
सबको हम लोग एक सिंगल क्वांटिटी मींस एक सिंगल पैरामीटर के हिसाब से मेजर नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव हैविंग अ गैसियस सोल्यूट, I can measure the gas, its quantity, or I can measure it in terms of pressure also. But if I'm having water, I can't measure it in terms of pressure. I have to measure it in terms of volume. And if I'm having solid, then I can measure it in terms of grams in the best way. तो अलग अलग फेज के लिए अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस हम लोग बताते हैं, बिकॉज उनको सॉल्यूशन बताते वक्त उनका मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करना अलग अलग फेजेस के लिए अलग अलग चीज कंफर्टेबल है हम लोगों के लिए. सॉलिड्स के लिए केजीज में डिफाइन करना कंफर्टेबल है, गैसेस के लिए प्रेशर के टर्म में डिफाइन करना कंफर्टेबल हो जाता है, लिक्विड्स के लिए वॉल्यूम डिफाइन करना कंफर्टेबल हो जाता है. 2 liters, 3 liters, 5 liters, 10 liters. I hope you people are able to understand me. Yes or no? Yes, sir. So that is why we are having these many concentration terms. So under the concentration term, the very first one which we are going to see is called as nothing but our mass percent. That is nothing but our mass percent. So let us understand what is the mass percent. Okay, so as I told you earlier also, that is nothing but mass of the component which we are taking, mass of the component which we have chosen, divided by total mass of the solution. Yes or no? The complete mass of the solution, total mass of solution into 100, because we are trying to calculate the percentage. हम लोग पहले भी ये किए हुए हैं, बहुत ही सिंपल है, राइट सर. हम लोग जिसका मास परसेंट कैलकुलेट करना है वो अकेले कितना वेट कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो अकेले कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, डिवाइडेड बाय द टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So we are trying to calculate mass percent. तो say for example, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आज के बाद कभी भी किसी ने तुम लोगों को बोला 5% वेट बाय वेट और मास परसेंट बोल दिया है ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, 5% mass percent, 5 mass percent, 5% weight by weight, glucose in water. ये देखते ही आप लोगों को क्या समझना है? देखिए सर, परसेंटेज देखते ही हम लोग समझते हैं लेट टोटल वेट इज इक्वल्स टू 100 grams. यस और नो? लेट टोटल Yes, sir. वेट इज इक्वल्स टू 100 grams. लिख लेते हैं, लेट टोटल weight of solution is equals to 100 grams. Okay, now 5%, okay, of total weight is glucose. Yes or no? Yes, sir. तो इसे निकालेंगे कैसे? 5% of total weight. ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है ना सर. 5% ऑफ 5% डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन. टोटल वेट हम लोगों ने एज्यूम किया 100 ग्राम्स. तो 5% ऑफ टोटल वेट इज योर ग्लूकोज. तो चलिए देखते हैं ग्लूकोज का वेट कितना है. सर 100 कट गया, सो मतलब 5 grams of glucose is present. How much amount of water, sir? 95. 95. 95 grams. 95 gram of water, because 100 grams total mass था, 5 grams glucose चला गया, तो बचा हुआ तुम लोगों का 95 grams water होगा. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा Yes, है. sir. I Yes, sir. सिंपल सा चीज है, ठीक है. चलिए इसी तरीके से ओके. अब मैं नहीं सुनना चाहता हूँ किसी से ना कि सर ये तो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, इसीलिए ना मेरे को नहीं आता है, इसीलिए मेरे को ये चैप्टर भी नहीं आएगा.
है ना, उठा उठा के ना फेंक दूंगा तुम लोगों को बाहर। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो भी फर्स्ट ईयर में है, मैं फिर से उसको डिस्कस कर रहा हूं, मैं फिर से उसको स्टार्टिंग से बता रहा हूं, अगर कोई ऐसा करेगा तो बहुत मार खाएगा। चलो, तो अब अगर मैंने बोला 26% by mass of 26% by mass of sucrose, बोलो शुभम। सर वो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 100 ही रहेगा ना सर? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है, हम लोग 100 ले रहे हैं। तुम चाहते हो 500 लेना, ले सकते हो, 200 लेना, ले सकते हो, 20 लेना है, ले सकते हो, 10 लेना है, ले सकते हो, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। मतलब परसेंटेज के हिसाब से सॉल्व करने पे फाइनल आंसर जो भी तुम कैलकुलेट कर रहे हो वो सेम आएगा। ये मैं फर्स्ट ईयर में एक बार प्रूव कर चुका हूं तुम लोगों को डिफरेंट वैल्यूज लेके। नेक्स्ट एग्जांपल इज 26% by mass of sucrose in water। तो अब हम लोग काफी एक्वाइंटेड हो गए, तो अब हम लोग इजीली बता सकते हैं if 100 grams of total sample is taken, then 26 grams is sucrose, yes or no? Yes, sir. And 74 the grams. rest 74 grams is water. I hope everyone is able to understand this, Yes, sir. Yes, sir. because इसका एप्लीकेशन आएगा, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं इतना रुक के बार बार इस चीज को नहीं बताऊंगा। द सेम चीज, the same things will come in our problems again and again, so you have to be very very careful, okay? Right, now let us move and understand. Sir, this you have made us understand mass percent. Say for example, when solids and solids are mixed together, or a solution of solid in solid is made, or a solid in liquid is made. But what is the case when liquid in liquid solutions are made? In that case, we will define something called as our volume percent. What will we define? We will define something called as volume percent. तो इसका भी सिंपल है, क्या है सर ये? वॉल्यूम Volume of ऑफ component. component divided by Volume of solution. total volume of solution into 100. Yes or no? Yes, sir. Yes sir. Say for example, someone has told us that 20% in bracket volume by volume hydrogen peroxide in water। तो यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे? देखिए, पिछली बार मास परसेंट था, तो लेट 100 ग्राम्स एज्यूम कर रहे थे, अभी वॉल्यूम परसेंट है, तो लेट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कितना लेंगे अभी? 100 ml. 100 लीटर 100 milliliter. 100 ml. 100 ml ले लेंगे, ओके? 100 लीटर्स ले सकते हो अगर तुमको लीटर्स के टर्म्स में सॉल्व करना है। वैसे 100 ml is the best option to do. So 100 ml of the solution we are taking, out of which 20% is H2O2. So volume of H2O2 is equals to, sir, 20% of total volume. Okay, 20% of total volume. Okay, so simply 100 and 100 will go off, so we will have 20 ml. So if volume of H2O2 is 20 ml, tell me what will be the volume of H2O? Sir, 80 ml. 80 ml. 80 ml. That's it. So this is how we will be using volume percent. Does anyone have any problem with this? No, sir. No, sir.
तो कभी भी मैं बोलूंगा हाँ, सर। 10% इथेनॉल इन वाटर, 10% लिक्विड बेंजोइक एसिड इन वाटर, तो ये ऐसे कुछ भी मैं बोलूंगा आप लोगों को तुरंत समझना है, ओके ओके सर परसेंटेज यूज किए हैं, वी हैव टू एज्यूम either 100 grams or 100 ml of the given solution. If it is in solid phase then 100 grams consider करूंगा, if it is in volume परसेंट, अगर लिक्विड फेज में है तो 100 ml कंसिडर करूंगा और परसेंटेज के हिसाब से निकाल दूंगा। कितना आसान है देखिए सर, सिंपली आप लोगों का स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते आपका लिख लेना है 20 परसेंट, परसेंट मीन्स 100 ऑफ, ओके ऑफ H2O2 मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कितना H2O2 टोटल, से फॉर एग्जांपल टोटल वॉल्यूम का, तो 100 ml इज द टोटल वॉल्यूम, सो 20% of the total volume is H2O2. Very good. Now that was your volume percent. Now let us move ahead. बोलो शुभम। सर वो मास परसेंट हमेशा सॉलिड के लिए रहेगा ना सर? मास परसेंट एक्चुअली डिफाइन किसी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली सॉलिड सॉल्यूशंस के लिए हम लोग मास परसेंट डिफाइन करते हैं। ओके यस सर। नेक्स्ट, से फॉर एग्जांपल हम लोगों को जनरल कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ओके नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, ये जनरली क्या होता है, हम लोग अपने घर में मम्मी जो है खाना बनाते वक्त या फिर कभी दिवाली या कुछ होता है तो जो स्नैक्स बनाते हैं ईद के टाइम में या हमारे क्रिसमस के टाइम में, जब घर में स्नैक्स बनता है, होम मेड फूड बनते हैं कुछ, राइट, तो उसमें जनरली मम्मी लोगों का एक फिक्स्ड चीज रहता है, क्या है वो, सिंपल, वो लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं बेटा, एक काम करो 200 grams ऑफ मैदा ऐड कर दो इन 200 ml ऑफ वाटर, से फॉर एग्जांपल, इस तरीके से वो कुछ क्वांटिटीज कुछ कॉन्सेंट्रेशंस वो डिफाइन करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये हमारे घर में नॉर्मल कॉमन यूज में होता है एंड एज वेल एज मेडिसिन इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हम लोगों का जनरली इसका यूज होता है। ओके सो वो कैसे डिफाइन किया जाता है सर, जनरली ग्राम पर ml, कैसे डिफाइन होता है, ग्राम पर ml, ओके मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेट बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। मास ऑफ solute dissolved in 100 ml of solution, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्राम पर ml, इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म रहेगा ग्राम पर ml। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। No, sir. No, sir. Okay, so later on in your first year I have talked about this, I told you sir, fluoride ions when they are present in water they are very harmful for consumption up to 1 ppm if they are present, मतलब 1 million water particles में, 1 million means 10 lakh water particles में अगर 1 fluoride ion present रहता है, then it does nothing to our teeth. Okay, our teeth are protected, no problem, teeth को कुछ नहीं होगा, the enamel can protect the teeth. But if the concentration of fluoride ions becomes greater than 1, that means if it becomes 2 parts of fluoride ion in 1 million parts of water, what does this mean? That means 2 fluoride ions in 1 lakh water particles अगर आ जाते हैं और उसको अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं, then you will see that your teeth start jolting. Okay, now sir ऐसा जो होता है sir, ऐसा कंडीशन में हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, बिकॉज 2 fluoride ions मतलब इनका मास कितना है, 2 into
2 into फ्लोराइड का से फॉर एग्जांपल 18 है, 2 into 18 36 ग्राम से फॉर एग्जांपल, डिवाइडेड बाय 10 lakh water molecules, 10 lakh into water molecule, each water molecule 18 grams say for example, तो 18 into 10 lakhs, Yes, sir. okay, so 36 divided by 18 into 10 lakhs क्या आएगा सर? 0.0000 something. That means इसका concentration almost zero. तो when we are having such type of सॉल्यूशंस जहां पे सोल्यूट ट्रेसेस में मिलता है, माइनर क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलता है, तब हम लोग डिफाइन करते हैं ppm, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स Per पर million. मिलियन. 1 million मीन्स 10 lakhs. तो पार्ट्स पर मिलियन कैसे बिताते हैं हम लोग? देखो बेटा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट आप लोग जिसका पीपीएम फाइंड करना चाहते हैं, जो ट्रेसेस में प्रेजेंट है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ इट बाय टोटल नंबर ऑफ parts of solution divided by 10 to the power of 6. Actually per million हमें पता करना है, तो total number of parts of the solution को 1 million हमें बनाना है, तो divided by 10 to the power 6. okay, say for example 30 lakh rupees कितना millions हैं? मतलब 30 lakhs divided by 10 to the power 6, तो हमें मिलेगा 3 million. तो पर मिलियन मतलब 10 to the power 6 हमें कैलकुलेट करना है, तो डिवाइड बाय 10 to the power 6 करूंगा तो ये डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा? ऊपर जब जाएगा ये पार्ट तो ये चला जाएगा इनटू 10 to the power 6 हो जाएगा. क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर. So number of parts of the component by total number of parts of all the components of the solution into 10 to the power 6. Sir ये into 10 to the power 6 क्यों आया? Because total number of parts of the solution per million हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसे millions में बनाने के लिए divided by 10 to the power 6, तो वो ऊपर चला जाएगा तो into 10 to the power 6 हो जाएगा. Now how many of you are clear with ppm? Yes, Yes, sir. sir. Very good. So this is how we are going to calculate ppm. Now we will move on for the next concentration term. All these things we have seen in our first year. Okay, see, that is why I have taken so much time to teach you people in our first year, because you see the second year becomes so easy if you people have concentrated in first year. अगर concentrate नहीं भी किया तो फिर भी पढ़ेंगे, but yet अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में कॉन्सेंट्रेट किया, सेकंड ईयर becomes so easy for us because the same thing which I'm going to repeat again. Okay, so the next concentration term which I'm going to talk about over here is your mole fraction. क्या है बेटा वो? Mole Mole fraction. So the name itself is suggesting us very clearly the mole fraction. Say for example mole fraction of A. How many moles does a particular component contributing divided by the total number of moles of the components? So अगर A और B mixed है together, then number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B. Yes or no? यस सर. Yes, sir. क्या दिवाकर क्लास सुन रहे हैं? यस सर. तो नंबर ऑफ मोल्स देखा देखा लग रहा है कि नहीं? यस सर. ठीक है, चलिए. So chi of A, that is mole fraction of A, is nothing but number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B. सोमुदीप है क्लास में? सोमुदीप? Yes. चरण
श्रीचरण है क्लास में? यस सर। लिंका बाबू है? आयुष लिंका? हाँ सर। चलिए, so mole fraction, that is nothing but number of moles of a given component divided by the total number of moles of all the components. In the same way, mole fraction of B, जिसको हम लोग खाई B, इसको खाई बोलते हैं, खाई, will be number of moles of B divided by total number of moles, that is number of moles of A plus number of moles of B. Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे मैंने एक चीज आप लोगों को सिखाया था, that the sum of all the mole fractions in a solution will always give you what, sir? 1. Very good. सारे मोल फ्रैक्शंस को ऐड करने से, ओके, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबका मोल फ्रैक्शंस को ऐड करने से हम लोगों को हमेशा 1 मिलेगा. Is that clear? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बस और दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, उन दोनों को भी हम लोग देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का झंझट खत्म हो जाए. ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हम लोगों का मोलारिटी. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर मोलारिटी? Yes, sir. Yes, It is denoted by a capital M. So what is molarity, sir? Defined as number of moles of solute On mass of a solvent. divided by volume of solution in liters. Very good. Volume of solution in liters, that is molarity. So what is the unit for molarity? Mole per liter or mole liter inverse. क्या ये क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? no, sir. बोलो शुभम. सर मोलारिटी को मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोल सकते हैं ना सर? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज नहीं बोल सकते हैं. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज तो अलग हो गया, वहां पे मास ग्राम पर ml आता है, यहाँ पे मोल पर लीटर आता है, तो दोनों में काफी डिफरेंस है. ठीक है. यस सर। Next concentration term is our molality. And how is molality defined, sir? Number of moles of solute divided by mass of solvent Okay. in kg is denoted by small alphabet M, and molality is going to have a unit of mole per kg, that is mole kg inverse. अच्छा, तो अगर मैं आप लोगों से पूछा among these two which is more preferable concentration term in a range where temperature keeps fluctuating, तो क्या बोलोगे आप लोग? सर मोलारिटी। Molality. तो कौन हो जाएगा? मोलालिटी, बिकॉज मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. मोलारिटी इज व्हाट, सर? टेम्परेचर डिपेंडेंट, बट मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. याद रहेगा ये? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. All right, so this is what we have seen today. I want everyone to complete your notes till here. जो कुछ भी मैंने बोर्ड पे लिखा वो आपके नोटबुक में होना चाहिए, right? And please prepare it properly. We will meet in our next class. Okay.